किसी बुक्स में आपको ये पेरिकार्डियम भी लिखा होगा, बट पेरिकार्डियम के पीछे इट अपीयर्स इकोजेनिक। क्यों? पेरिकार्डियम के पीछे आपका लंग्स है। सो ड्यू टू डिफरेंस इन अकॉस्टिक इम्पेडेंस बिटवीन द पेरिकार्डियल टिश्यू एंड द लंग, तो ये आपका हाइपर इक्विक जस्ट डायग्राम उस तरह से लिखेंगे। यू कैन कॉल इट पेरिकार्डियम और स्पेसिफिकली पेरिकार्डियल लंग इंटरफेस। नाउ ठीक है, फोर्थ चैम्बर व्यू में द स्ट्रक्चर्स व्हिच विल सी लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, देन लेफ्ट एट्रियम के बाद मिट्रल वेल्व और बाइकस्पिड वेल्व, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, देन above left ventricle right ventricle and left ventricle, they are separated by interventricular septum. Similarly left atrium and right atrium, they are separated by interatrial septum, ठीक है। So in 2D we have studied its usefulness is that we can use it for qualitative analysis. So this normal thing you should have in general whenever you take the image, ठीक है, whenever you take any 2D image, your interventricle it should be like this कि एक chamber के ऊपर दूसरा one above one chamber another chamber should be there, ठीक है। ऐसे it should not be elliptical, it should be horizontal, like if the base of the heart is here, apex should be like this, है ना, apex should be like this, it should not be like this. अगर this image is, if you are unable to obtain a horizontal image, then your measurement will be underestimated or it will be wrong, ठीक है। So this is base of the heart, apex of the heart should be parallel to it, and the interventricular septum it should be also be flat, it should not be bulging, because if this interventricular septum if there is bulging, it indicates कि कहीं ना कहीं एक chamber, for example अगर left ventricle enlargement है then it will be bulge like this, अगर right ventricle enlargement है then it will be U shape, ठीक है। So it is also important. Another thing is that in general जो wall thickness है, the thickness of left ventricular wall is 2 times the thickness of right ventricular wall. Right ventricle का wall thin होता है, left ventricle is thick. In the similar way, अगर if you see the volume in normal dog, the chamber dimension of left ventricle it is 3 times the chamber dimension of right ventricle. मतलब right ventricle का wall is half times left ventricle wall and right ventricle का volume is 1/3 times left ventricle wall, ठीक है। Then interventricular septum should be liquid flat, there should be no bulging because bulging is seen in certain disease condition. So this was the image in diastole. Diastole मतलब क्या है, mitral valve is open and left ventricle is filled, इसलिए chamber आपका बड़ा दिख रहा है। And in systole when the ventricle has contracted, mitral valve is closed and aortic valve will open. अब systole में भी एक और चीज़ है, systole में अगर आप you can't say एक hypertrophic cardiomyopathy, क्योंकि in normal when जब ventricles contract हो जाते हैं then the chamber dimension it decreases but at the same time the thickness of wall it increases. So कई बार आप ऐसे देखो you can't say थिकनिंग है तो ये hypertrophic cardiomyopathy है, you have to go for other features also, है ना। Then also another thing you have to see for whether any changes are there in the valve, valvular regions को नहीं है, like इसमें mitral you have to see the mitral valve, ठीक है। अगर उसमें कोई थिकनिंग है, if there is any vegetative growth then you can say it is mitral valve disease or any other condition. So this is normal and this is abnormal. अब आप देखिए you can differentiate between normal and abnormal. First thing देखो, इसमें left ventricle appears like gas भरी है, it is dilated. Left atrial dilated है. Another thing which I told you that the interventricular septum should be flat. You see bulging of interatrial septum, which indicates that the atrium में backflow है and it is bulging towards, ये इस तरह से bow shape बना है ना, and interventricular septum is also bulged towards that side, ठीक है। अब जैसे जैसे as the chamber will get dilated तो क्या होगा, जो interventricular septum and wall thickness है it will get reduced. So this was a typical case of DCM. And another thing is that this जो आप ये hyperechoic structure देख रहे हो, this is caudate tendineae. So caudate tendineae they are the tendinous structures जिनका function होता है which connect your papillary muscle to the mitral valve, ठीक है। कई बार क्या होता है advanced cases में this caudate tendineae gets ruptured. अगर caudate tendineae rupture हो जाएगा so the mitral valve it loses or tricuspid valve it loses its control और उसकी ऐसे flailing होती है जिसको आप caudate tendineae rupture बोलते हैं। और जिस केसेस में caudate tendineae rupture हो गया वहाँ पे regurgitation वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। So this was normal, this is abnormal. Abnormal क्या था, severe left ventricular dilatation, severe left atrial dilatation, bulging of interatrial septum, bulging of interventricular septum, and the left ventricle जो normal उसका elliptical shape है वो it loses its elliptical shape and it gets spherical shape.
इसी के बेसिस पे DCM के केस में देयर इज वन पैरामीटर स्फेरिसिटी इंडेक्स। स्फेरिसिटी इंडेक्स एक पैरामीटर है जिसमें लॉन्ग एक्सिस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लॉन्ग एक्सिस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल डिवाइडेड बाय शॉर्ट एक्सिस, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1.65। ये मैम लाइक नॉर्मल लेफ्ट वेंट्रिकल इट विल बी एलिप्टिकल इन शेप, ठीक है। जब व्हेन दिस चैम्बर डायलेटेशन तो द लेफ्ट वेंट्रिकल इट लूजेस इट्स एलिप्टिकल शेप एंड इट बिकम्स राउंडेड और स्फेरिकल डिपेंडिंग अपॉन दैट। एक जैसे आपका फ्रैक्शनल शॉर्टिंग है, इजेक्शन फ्रैक्शन वगैरह है, उसी तरह से DCM में देयर इज अनदर इंडेक्स दैट इज नोन एज स्फेरिसिटी इंडेक्स। कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैक्सिमम लॉन्ग एक्सिस डायमीटर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल डिवाइडेड बाय मैक्सिमम शॉर्ट एक्सिस ऑफ ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन ये मेजरमेंट होती है इन डायस्टोल, जो इसका रेशियो आएगा इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1.67 1.65। आप उसका पिक्चर ले लेना, ठीक है। सो दिस वाज नॉर्मल, दिस वाज एबनॉर्मल। देन कमिंग टू स्फेरिसिटी इंडेक्स स्फेरिसिटी स्फेरिसिटी इंडेक्स। Then that was long axis view. Then coming to short axis view. Short axis view में the main difference is that आपका ट्रांसड्यूस, दो पॉइंट को याद रखना है। इन शॉर्ट एक्सिस व्यू you rotate your transducer. Earlier the reference mark of your transducer